नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज मैं मेरे अपने होम कंफर्ट्स में यह आज वीडियो शूट कर रहा हूं। इसके पीछे कारण है कि मुझे खुद को ओमिक्रॉन हो गया है। थर्ड वेव की चपेट में, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, संख्या आप लोगों सबको पता है। मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग अपडेटेड रहते होंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में मैंने ट्रैक करना बहुत दिनों से बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे उसका कुछ खास एडवांटेज नज़र नहीं आता। खास बात जो देखने योग्य है मित्रों इस ओमिक्रॉन वेव में, वो है क्या आईसीयू एडमिशंस बढ़ रहे हैं, क्या डेथ्स बढ़ रही हैं। बस इसी दो पैरामीटर पर अपने फोकस करनी चाहिए। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में और इस थर्ड वेव के बारे में। स्वागत है आपका एक बार पुनः लोक टॉक्स चैनल पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ कतर में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ के सिस्टम के अनुसार एक ऐतराज ऐप जो है वो बहुत ही इफेक्टिव ऐप बनाया गया है। वो इतना इफेक्टिव है कि आप मतलब जैसे ही आरटीपीसीआर आप कराते हैं वैसे ही आपका ऐतराज ऐप जो है वो रेड हो जाता है। रेड, येलो, ग्रे। ग्रे का मतलब है दैट यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू समबडी हु इज ऑलरेडी रेड। येलो का मतलब है दैट यू आर इन क्वारंटाइन, वेदर होम क्वारंटाइन, होटल क्वारंटाइन, एनीवेयर। और रेड का मतलब है दैट यू हैव पॉजिटिव रिपोर्ट। मेरा ऐतराज आपको मैं अगर दिखाने का प्रयास करूं तो आज की तारीख में जिस तरह आप देख सकते हैं, 4th डे दिखा रहा है। यहाँ पे डेज काउंट भी आते जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे अपन इसी विषय पर। 4 दिन से मैं भी होम क्वारंटाइन में हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ। और जांच मैंने कराई थी वेडनेसडे के दिन। थर्सडे को सुबह रिपोर्ट आती है, तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया जाता है कि सब आपको घर जाना चाहिए। हालांकि मुझे सिम्टम्स जो थे वो 30-31 तारीख को थे। आरटीपीसीआर की एक खासियत है कि आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव लंबे समय तक आ सकती है। इसीलिए आजकल काफ़ी जगह जो है बड़ा डिस्प्यूटेड है कि दोबारा आरटीपीसीआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दोबारा भी कराने जाओगे तो पॉजिटिव आ सकती है। खास पीरियड होता है वो ट्रांसमिशन वाला पीरियड। ट्रांसमिशन वाला पीरियड को तो शायद हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि मुझे मेनली सिम्टम्स से 30-31 तारीख को, 31st of December, I had some symptoms. What symptoms I had? I had full body ache, generalized body ache, arthralgias, पूरे generalized body pain, सारे joint pains हो रहे थे. Mainly thighs, the back aspect of the thighs, the hamstring group of muscles, the quadriceps group of muscles, इनमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। काफ़ी कुछ हद तक काफ में भी हो रहा था, जॉइंट्स में भी पेन हो रहा था। तो ये आर्थ्रालजियास, माइल्जियास के रूप में मुझे मैनिफेस्ट हुआ था। मुझे लगा कि ये 2 दिन की बात थी, 30-31 को खाली मुझे हुआ था। और उसके बाद कोई 1 तारीख से लेकर आज दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं। मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया था जो नेगेटिव आया था। मंडे के दिन कराया जो नेगेटिव आया। वेडनेसडे को आरटीपीसीआर के लिए सैंपल दिया, जो कि एज अ प्री ट्रैवल था। मुझे कुछ आवश्यकता थी इंडिया ट्रैवल करने की। आई कुडंट ट्रैवल बिकॉज आई गॉट आरटीपीसीआर पॉजिटिव। एनीवे, तो आगे चर्चा करते हैं इस ओमिक्रॉन एंड थर्ड वेव के बारे में। द सिम्पटम फॉर्मेशन इज कंपोज्ड ऑफ कटिंग ऑफ द वायरस इनटू 2 parts with multinucleation, with extensive involvement of pulmonary tissues, and this is missing in this mutant, sparing the lungs. Omicron affects the cells of the method by the method of endocytosis, a more safer pathway of affecting the cells. Number 2 is it is likely that the mutation had made the virus more easily visible to our immune system, and the mechanism thus offering protection, the process of modified fusion. These are all opinions which are being expressed by experts, which I am talking to you about. Vaccination status and Omicron. Let's understand about this.
Point number 1 is affects both vaccinated as well as non-vaccinated persons. Point number 2 is the vaccination might have contributed to the benefits of presenting as less severe disease. Also, the prior infection can contribute to the less severity observed with this particular variant. Third point about vaccination is the booster dose may further add to the protection. Point 4 is overall the burden would have been larger or same if a lot would not have been vaccinated. There remains a proposal, therefore, that this milder disease phase be utilized to increase more vaccination in all the countries, right? Particularly in India and places like this, like Qatar, a lot of booster doses have already been received by majority in Qatar. India has also started their booster administration. So the diagnosis is by you need a different PCR or a genotyping is required. Doubts unresolved, will it contribute to herd immunity? Will this be the end or likely extinction of COVID after this? May not, because the scientists consider this strain as a deviant rather than a variant. That's what I started with, right? So let's talk about a little bit of treatment of this particular. Is it different than COVID? So the treatment here is absolutely symptomatic. Most of the patients do well at home, that is, will remain in mild or moderate category, thus making treatment at home more important, right? So by and large, all patients can be treated at home. Even I have treated myself at home. साथियों, एक बात और, ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में अपन चर्चा करते हैं। ज्यादातर लोगों को ओमिक्रॉन में जो तकलीफ हो रही है वो है बॉडी एक, मायल्जियास मतलब मांसपेशियों में दर्द होना, और आर्थराल्जियास काफी कुछ हद तक लोगों को नाक बहना और सर्दी खांसी होना, मतलब कॉमन कोल्ड जिस तरीके के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उस प्रकार से हो रहा है। कोई बहुत क्लियर का डिस्टिंक्शन फीचर अभी कॉमन कोल्ड और ओमिक्रॉन के बीच में अभी नहीं है। काफी कुछ लोग उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं और अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस तरह के कॉमन कोल्ड सिम्टम्स जो भी हैं उनको माना जा सकता है कि ओमिक्रॉन के कारण है, और दूसरी प्रकार सारी चीजें भी रैपिडली स्प्रेड आउट हो रही हैं। तो बॉडी एक, फीवर के लिए पैरास्टामोल कतर में पैराडोल जॉइंट के नाम से मिलता है 650 मिलीग्राम्स का, 1 to 2 tablets 3 to 4 times a day। हिंदुस्तान में डोलो 650 के नाम से मिलता है 1 to 2 tablets 3 to 4 times a day for 4 to 5 days, should be continued। For running nose, we can take antihistaminics like loratadine or cetirizine. Just once a day is good enough। In India, we have one Synarest also available that comes with the combination of paracetamol and antihistaminics, anti-decongestant. That can also be used 1 tablet 3 times a day। For cough, one should prefer to take honey-based cough syrups. All right. So this is what is very important for me to add about. Rest all, you must consult a nearest doctor, to your regular doctor, and go with the professional advice as in what you get. Right. This video is only for your educational purpose, for the sake of your guidance, not for any professional advice or not for any substitution to the medical consultation. Okay. Standard treatment remains the same. Check SpO2. I've discussed, I've made many more videos before, that every 4 to 6 hours you should check your SpO2, which should be 95, 94, 95 and above. Less than 94, it is definitely a concern. 6 minutes walk test. Within home premises, walk for 6 minutes. If it is dropping more than 4%, then definitely it needs to be thought about. Symptomatic treatment is the mainstay of treatment in Omicron. Anti-allergics for running nose and cough and all. Antitussives for cough. Right. No antibiotics is required. No hydrochloroquine is required. No ivermectin is required. No zinc is required. Inhalation of budesonide
is an impressive addition for those inhalers, and budesonide can be added to do the inhalation, and even in steam also it can be used. Antivirals, cocktails with antibodies and the monoclonal antibodies have emerged recently and require a brief mention. Within 3 to 5 days of onset of symptoms, positive result of RT-PCR antivirals like molnupiravir, Paxlovid, remdesivir, up to 10 days of onset of symptoms can be considered, right? Like in my case, I was turned out to be RT-PCR, and when I did was already 12 days were over, right? So already that time period to give antivirals is already gone. So this is all we need to understand. Mainstay of treatment is all symptomatic. Nothing much to be worried about. But yes, taking precautions. Yes, next video I'm going to make it on which particular mask is definitely going to help in this particular Omicron. I'm going to talk about it in my next video. So this was a brief about Omicron, and I hope if there is anything what you need to know about it more, you can definitely ask me in the comment box. You can communicate to me on my WhatsApp numbers. Somehow I'm finding a lot of people feel more comfortable to communicate to me on my WhatsApp. I'm happy to receive all the communications. Either ways, whatever one feels like, you can definitely choose your communication methodology with me. Thank you very much. Next video will be on what particular mask should be used in this Omicron, because there are certain new guidelines which have come up. We'll be talking about that. Thank you very much. Thanks for paying attention to and sparing your time to listen to my video on this Omicron. Thank you very much. Make sure that you are sharing with your friends and relatives, and don't forget to subscribe and hit on the bell icon. Thank you very much. Bye-bye. Take care.